अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले लेक्चर के बीच में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज एन एग्रीमेंट टू सेल। आज के लेक्चर के बीच में हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द टू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल? Relevant provisions remain to be the same, Section 2 and Section 4 of the Sale of Goods Act 1930. सबसे पहले, sale is an executed contract of sale, whereas an agreement to sell is an executory contract of sale. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमने पिछले लेक्चर के बीच में बात की थी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम एग्रीमेंट टू सेल और कंप्लीट होता है एट द एग्जीक्यूशन ऑफ सेल. सो once the sale is complete, it means the contract of sale has been executed, it has been completed. जबकि उसके बाद जो एग्रीमेंट टू सेल है वो एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, मीनिंग देयर बाय कि इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को अभी फ्यूचर के बीच में कंप्लीट होना बाकी है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ. देन ट्रांसफर प्रॉपर्टी, सेल के बीच में प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स फ्रॉम सेलर टू द बायर और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में प्रॉपर्टी डज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर. ट्रांसफर प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ब्रीफली हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रांसफर प्रॉपर्टी मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. तो सेल के बीच में ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स फ्रॉम सेलर टू द बायर, whereas in an agreement to sell the ownership does not transfer from seller to the buyer. Then comes nature of rights of the buyer. Sale just in rem, meaning thereby rights against property, and in agreement to sell just in personam, rights against person. इसका मतलब यह है कि अगर एक सेल के बीच में प्रॉपर्टी जो है वो दैट इज नॉट हैंडेड ओवर टू द बायर according to the terms of the contract, the buyer has the right to file a claim against the property. Buyer can pursue the property and file a claim for recovery of it. उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल है, अभी सेल कंप्लीट नहीं हुई है और जो सेलर है वो एग्रीमेंट टू सेल को ब्रीच कर देता है और उसके मुताबिक में सेल को एग्जीक्यूट नहीं करता, तो जो बायर है वो प्रॉपर्टी को परसू नहीं कर सकता, वो प्रॉपर्टी को चेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनल क्लेम अगेंस्ट द सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोर्ट के बीच में फाइल कर सकता है. Risk of loss, risk of loss and damage transfers from the seller to the buyer in sale. Unlike that, in an agreement to sell, it remains with the seller. Risk of loss and damage means if the property is destroyed or it is deteriorated in quality in a sale, if the sale has been executed, that risk transfers to the buyer. So any deterioration in the quality of the property or any other type of loss of the property belongs to the buyer in case of sale. Unlike that, in an agreement to sell, risk of loss remains with the seller, and the loss or damage of the property has to be undergone by the seller. Remedy against non-payment, sale, suit for recovery of price, agreement to sell, suit for damages. Sale has been executed, but the buyer declines to make payment according to the contract. In such a case, the seller has the right to file a recovery suit for recovery of price against the buyer. Unlike that, in an agreement to sell, seller can only file a claim for recovery of damages but not recovery of price. Remedy against breach committed by the seller. If the seller commits breach and does not fulfill its obligations according to the terms of the contract, sale के बीच में damages plus recovery of goods, buyer जो है वो damages भी recover कर सकता है seller से for breach of contract और goods भी recover कर सकता है. और agreement to sell के बीच में he can only recover the damages but he cannot file a claim for recovery of the goods. Right of resale. Right of resale in a sale transfers to the buyer, whereas in an agreement to sell, right of resale remains with the seller. Ascertained and unascertained goods. जो सेल है वो सिर्फ और सिर्फ असर्टेन गुड्स की हो सकती है. उसके बाद जो एग्रीमेंट टू सेल है वो असर्टेन और अनअसर्टेन दोनों गुड्स का हो सकता है. दोनों में फर्क क्या है? जो असर्टेन गुड्स है वो आइडेंटिफाइबल होती हैं, जो अनअसर्टेन गुड्स हैं वो आइडेंटिफाइबल नहीं होती. एक एग्जांपल के जरिए से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. आप एक फर्नीचर शॉप पे जाते हैं और आप उनको कहते हैं आपको 1000 कुर्सियां चाहिए.
वो आपको एक वेयर हाउस के बीच में ले जाते हैं और वहाँ पे जहाँ पे उनके पास हज़ारों की तादाद में एक ही तरह की बनाई हुई कुर्सियाँ मौजूद हैं। वो आपको कुर्सियाँ दिखाते हैं और कहते हैं कि इसके बीच में से हम 1000 कुर्सियाँ आपको दे देंगे। ये असर्टेन गुड्स हैं। चाहे उनके पास अभी दसियों हज़ार कुर्सियाँ वहाँ पे पड़ी हुई हों, लेकिन 1000 कुर्सियाँ आपको डिलीवर करने के लिए वो उन्होंने अभी अलहदा भी नहीं की हैं, लेकिन उसके बावजूद ये गुड्स जो है ये असर्टेन गुड्स हैं और इनकी जो सेल है वो हो सकती है। उसके बरक्स अनअसर्टेन गुड्स क्या है? आप फर्नीचर शॉप पे जाते हैं और उनको कहते हैं मुझे 1000 कुर्सियाँ चाहिए। और वो आपको कहते हैं कि जी हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म के बीच में तो अभी कुर्सियाँ मौजूद नहीं है, अलबत्ता हम आपको कुर्सियाँ बना के 1 महीने के बाद आपको डिलीवर कर देंगे। ये गुड्स अब अनअसर्टेन है, क्योंकि अभी आइडेंटिफाई नहीं हो सकते, अभी वो एक्जिस्टेंस के बीच में भी नहीं है। लिहाजा जो सेल है वो सिर्फ और सिर्फ असर्टेन गुड्स की हो सकती है और जो एग्रीमेंट टू सेल है वो असर्टेन और अनअसर्टेन दोनों गुड्स का हो सकता है। आप अनअसर्टेन गुड्स के हवाले से एग्रीमेंट टू सेल कर सकते हैं कि 1 महीने के बाद आप कुर्सियाँ मैन्युफैक्चर करके तो हमें डिलीवर कर देंगे। तो दिस इज़ एन एग्रीमेंट टू सेल व्हिच विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द गुड्स वुड बी ट्रांसफर्ड, व्हेन द प्रॉपर्टी वुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर। That's end of it. Thank you very much for watching. Next lecture के बीच में we shall come up with a new topic. Thank you.